Hello everyone. Today we are going to talk about an interesting topic on women, that is the uterine fibroids. Uterine fibroids are basically benign tumors that occur inside the womb or the uterus of a woman. Basically, what are the causes that result in uterine fibroids? Uterine fibroids, as such, there is no particular cause that has been found to result or cause these tumors. They are not cancerous, but usually the factors that have been associated with these are either hormonal changes, किसी हार्मोन के चेंज के कारण या तो ये फाइब्रॉइड्स बनते हैं, या फिर ये किसी कारण से आफ्टर प्रेगनेंसी और इन केसेस जहाँ पे विमेन में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं यूट्रस में, उन केसेस में ये कंडीशन मोस्टली डेवलप होती हैं. अब इसके जो टाइप्स हैं अगर हम बात करें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बेसिकली आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर लोकेटेड, यानी कि जहाँ पे उनकी ग्रोथ हुई है उसकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें कि जो फर्स्ट है वो है कि दे आकर इन द मसल्स ऑफ द यूट्रस, that is the myoma, and those are known as the myomal fibroids. Then there's some of the fibroids, they occur inside the inner lining of the uterus, and some they may occur outside on the outer lining of the uterus, and depending upon that they are classified into submucosal or subserosal. And then there are some pedunculated tumors that are present where they are suspended from a stalk, either on the inner side of the uterus or on the inner lining of the uterine cavity. So depending upon where they are situated and what part of the uterus they are present, they are classified into these usually 4 types. Now depending upon the symptoms, if we discuss the symptoms of uterine fibroids, so basically the common and the most commonly seen symptom in the clinic is basically heavy bleeding. जो विमेन आती हैं मोस्टली उनको या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द मेंसेस, और उसके साथ क्लॉट्स की फॉर्मेशन रहती है पेशेंट में. कुछ पेशेंट्स के अंदर बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड्स के इंटरवल के बीच में कईयों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. कुछ पेशेंट्स के अंदर ब्लीडिंग के साथ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, जिसे हम प्रोट्रैक्टेड ब्लीडिंग भी कहते हैं. कुछ केसेस के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड्स भी रहती है और बहुत हैवी भी रहती है. इसके अकॉर्डिंग टू दीज सिम्टम्स द पेशेंट ऑल्सो हैव अदर सिम्टम्स एज वेल, यानी कि जो पेशेंट में ख़ास करके उनको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है इन पेशेंट्स में. हैवीनेस रहती है लोअर एब्डोमेन में, ख़ास करके इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग द पीरियड्स. और अगर ब्लीडिंग हैवी है तो उन केसेस में पेशेंट को अनीमिया भी डेवलप हो सकता है लेटर ऑन ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव ब्लड. कुछ पेशेंट्स में वीकनेस प्रेजेंट होती है, एंड देन देयर इज़ ऑल्सो सम ब्लीडिंग दैट अकर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे वी ऑलरेडी सेड दैट. एंड देन मेनोरेजिया और मेटरेजिया हो सकता है, दैट इज़ द स्पेसिफिक मेडिकल टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड्स. And in some cases, in case of sexually active females, they may have painful intercourse, or that is known as dyspareunia. So these were some of the common symptoms of the fibroids of uterus and their particular symptoms, and these symptoms are usually present in older women, and the condition is more common in cases of above 40 and 45 years of age. Now what is the general management that is done in case with allopathic treatment? So in allopathy basically अगर हम बात करें, so before we discuss that, let me also discuss about the methodologies that are used to detect these tumors. So जो उसमें commonly treatment रहता है उसको how they are able to diagnose that. So there are different procedures that are done, such as MRIs that uses the sound and the waves to detect the tumors.
Then there are sometimes there are ultrasounds that are done, or there is hysteroscopy, that is basically a tube that is inserted into the uterus directly, and a small scope or a camera is inserted on the tip, and that can help to visualize the internal part of the uterus, and then we can detect that whether these are present or if there are any fibroids present. Then there are also blood tests that are done to detect for anemia, or hormonal tests can be done to see if there are any variations in the normal hormones that may be responsible for this condition. Now, depending upon the treatments that are done, the treatment usually are basically hormonal treatments that are done. In this case, basically intrauterine devices, they are inserted inside the uterus that releases small amount of either progesterone or a mixture of both estrogen and progesterone, and that helps to regularize the bleeding and also to help to decrease the heavy bleeding in the patient. सेकेंड जो होता है, इसके अंदर यूट्राइन एब्लेशन किया जाता है. दैट मीन्स देयर सम पार्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी इज़ रिमूव so that the bleeding completely gets stopped in case the fibroid is very large and there is excessive bleeding. कुछ केसेस के अंदर यूट्राइन कैविटीज़ के अंदर जो ब्लड सप्लाई आर्टरीज़ की जो फाइब्राइड को प्रोवाइड हो रही होती है उसको कट कर दिया जाता है, so that the blood supply to the fibroid is completely cut off, and that in turn shrinks the fibroid and causes further decrease in its size. Then there are some other procedures as well, like endoscopy, myometrial ablation, and some other procedures that are followed depending upon what kind of fibroid, how large it is, what are the symptoms, and what problems the patient is facing. In case of now the homeopathic management, if we speak about that, then there is very excellent and good medicines that are available for uterine fibroids. Now, fibroids can be either like single fibroids which are large and present in one part of the bleeding. They may not cause any symptom or any bleeding, but if there is a single large fibroid and that is not causing any bleeding itself, then medicines such as Auramure natrum or Auramure can be given, which can help to reduce its size. अगर पेशेंट के अंदर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट हैं, तो यूट्रस के अंदर अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही बट जो फाइब्रॉइड्स है वो मल्टीपल हैं और स्मॉल साइज़ में हैं, तो उन केसेस के अंदर मेडिसिन सच एज कार्बो एनिमेलिस कैन बी गिवन. कुछ केसेस में जहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है फाइब्रॉइड होने के कारण और पेशेंट को हैवीनेस रहता है लोअर एब्डोमेन में, और जो ब्लीडिंग है वो एवरी अल्टरनेट साइकिल पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए चलती है और हैवीली प्रोफ्यूज ब्लीडिंग रहती है, तो उन केसेस के अंदर टेरेंटुला इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट. नेक्स्ट जो मेडिसिन है वी कैन स्पीक अबाउट इज़ द विनका माइनर, विच इज़ गुड इन दोज केसेस जहाँ पे डार्क कलर्ड ब्लड ब्लीडिंग में आता है और उसमें ब्लीडिंग का जो क्वांटिटी है वो कम रहती है, बट पेशेंट को हैवी डार्क कलर ब्लड आता है. अब नेक्स्ट मेडिसिन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉस्फोरस. इसके अंदर जो ब्लीडिंग का कलर रहता है वो काफ़ी ब्राइट रेड और एक्टिव ब्लीडिंग रहती है, बट जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड होता है वो कम होता है. कुछ केसेस में एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण अगर पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, या वो अगर पेशेंट वॉक करता है तो उसमें पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, या कुछ पेशेंट्स में जहाँ पे पेशेंट जो है एज अ रिजल्ट लाइक वेमेन, दे आर वेरी एम्बिशियस वेमेन और उनको अपना कैरियर्स एंड ऑल दोस बनाने का ज़्यादा रहता है, तो इन केसेस ऑफ मेंटालिटी दीज वेमेन सेमिसिफुका इज़ अ गुड मेडिसिन. अगर पेशेंट में रिलैप्स होता है ब्लीडिंग बार बार, यानी कि फाइब्रॉइड के कारण बार बार ब्लीडिंग प्रिवेंट मेडिसिन से हो जाती है लेकिन फिर दोबारा से रिलैप्स होती है, तो उस केसेस में भी सेमिसिफुका इज़ अ गुड मेडिसिन. अब अगर फाइब्रॉइड्स यंगर एज में प्रेजेंट हो, यानी कि यंग फीमेल्स में अगर ये कंडीशन देखने को मिले और उसमें पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम साथ में है, या पेशेंट को कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं थायराइड ग्लैंड के,
then in those cases में thyroidinum is a good medicine, but we have to adjust the dose according to the symptoms. And then there are also women who are very obese or very thin, and depending upon their structure or body structure, if the patient have some issues, then we can provide them medicines that can be given for these fibroids. अभी कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखने को मिलता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको बैक एक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या अगर उनको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है या ज़्यादा टेंशन रहता है और बैक एक साथ में रहता है, उन केसेस के अंदर मेडिसिन सच एज नेट्रोम्यूर, सीपिया और ट्रिलियम कैन बी अ गुड मेडिसिन दैट कैन बी गिवन. Now, depending also upon where the fibroid is located, medicines can be given to the patient, such as उनकी कहाँ किस टाइप का fibroid है, like अगर subserosal fibroid है या interstitial fibroid है, उन cases के अंदर medicines can be provided that can be useful for these patients. Also अगर submucosal fibroid है, then in those cases also we have good medicines that can be given according to the location of the fibroid. So this was a small informative video upon uterine fibroids, its symptoms, causes, its diagnosis, and the homeopathic as well as allopathic management in general. I hope you have a good information about this important topic, as many women suffer from these nowadays. And also diet management is very important in such cases. For example, it is highly recommended that patients take a healthy, nutritious diet, especially with lots of seeds like chia seeds, almonds, or they can take some flax seeds or many other types, because those are very highly rich in omega-3 fatty acids and other nutrients that help to shrink and improve the general condition of these patients. So this was an interesting information, and in case you got some information, please like and share, and have a great day. Thank you.